हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग आए हैं इंडियानापोलिस के ज़ू में। तो चलिए आप लोगों को आज दिखाएंगे यहाँ का ज़ू कैसा होता है। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस। यहाँ से हम लोग अपना टिकट दिखा के आगे गए। यहाँ पे हम लोग सी लायन देखने के लिए आए। तो हम लोग आगे भी नीचे से इसका जो व्यू है लिए हैं और वो काफ़ी अच्छा व्यू है। तो हम लोग आगे जाके वीडियो में वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। There's 5 this time. Each time there's one more. 2 ways to hoop. ये हम लोग आ गए डेजर्ट एरिया में। यहाँ पे काफ़ी सारे डेडली स्नेक्स है और मुझे तो देख के ही डर लग रहा था, इवन सारा को भी। तो हम लोगों को देखने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। तो Tortoises. I think they're exploring. They're trying to keep. Notice how it's like piling its body up? It's trying to keep. Right, that's the big one. So I guess with the you have to like poke that. Look at the big one. Now you're in. Oh, new one. Is it rising? यहाँ पे हम लोग पहली बार जिराफ को अपने हाथ से खाना खिलाए हैं। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आइए आप लोगों के साथ भी वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। Alright, come on, let's let someone else do it. जाओ जाओ ना जाओ। Do you want to do it one more time? वेट 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 सर। It's okay. I've got little snacks for her. So Cheetah's a dominant female, so she's gonna want to take all the snacks. That's what I see already. सारा कम हियर। I didn't get a picture of her hand. Okay, now. You can do both of mine. That's one of them. You shouldn't drop. You shouldn't have this on it. Lion's right down here, buddy. Boys, come here. You want mommy to get a picture of you with the rhinos? राइनो। Get up there by your brother. The rhino's in the background. अरे सुन लिया। No, on the other side. Other side. Banana. Other side. That's one. Okay. Right up
your clothes room. Is this one you want to see? देखो, Rhino is thirsty, mister. See, Rhino is drinking water. गंदा उधर से पूरा दिखेगा पता है ऐसे घूम के इधर भी लाइन लेडीज What's the lion say? baboon It's like Mama. Ja. This is Mama. यहाँ तक भी नहीं इसे भूख लगा कोई नहीं खिला बोलते हैं ना जंगली मुर्गा यहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट्स थे और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी देख सकते हैं कि एलिफेंट को बहुत पता नहीं कुछ अच्छा लग रहा था तो वो डांस किए जा रहा था काफ़ी देर से। तो यहाँ पे हम लोग जो जंगली पिग है वो देखे और इन लोगों के आप लोग देख सकते हैं कि दांत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। एक मूवी भी आई थी उसमें गाना था हकुना मटाटा, उसमें ये था। ये जो बर्ड है इसका नाम है फ्लेमिंगो। ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था और कुछ बर्ड्स जो है ये लोगों का खासियत है, ये लोग एक पैर में बहुत देर तक खड़ा रह सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी सारा एक पैर में खड़ा भी है। It's gonna rain pretty soon. Elizabeth, you know why they're pink? Oh, that's a fox? You gotta go see more animals. If you don't see all the animals, then you don't get bored. That is slippery, okay?
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। यहाँ जो जिराफ को हम लोग जैसे फीड कराए, बर्ड्स को भी फीड कराने के लिए हम लोगों को कुछ लिक्विड दिया गया था। तो हम लोग सब ने मिलके फीड कराया। इवन जो बर्ड्स है, जो पैरट्स है, वो राजेश के हाथ में आके, इवन सर में भी आके बैठ गया था। गुड जॉब सारा। Yeah. Let's go, Sarah. Let's go. यहाँ से हम लोग डॉल्फिन शो के लिए जा रहे हैं, तो चलिए आप लोगों के साथ इसका भी मज़ा ले लेते हैं। Over there we have Kelly working with Maui. We have Ashley working with Oren. And we have Sydney working with Chemo. Other times we might give them a favorite food, like this herring here. And sometimes we show them how much we care with a quick back rub or a hug. As you can see, these dolphins mean a lot to us, but dolphins are found in many different climates and locations around the world. To help us better understand why it's so important to protect marine mammals like these, here are a few cetacean experts to share their thoughts. I have been fascinated by the ocean and all of the incredible creatures that call it home. Growing up, my grandparents lived right on the beach. I spent many summers walking along the beach with my grandma, searching the sand for sharks' teeth and pointing out dolphins swimming in the distance together. She made me realize when I was just a kid that I wanted to grow up and make a difference in ocean conservation. At a young age, I was inspired by my grandma to feel connected to the ocean and the animals that live there. Now, that connection continues to grow each and every day as I work with these amazing animals here at the Indianapolis Zoo. Now Kelly will give an
another one of you the chance to interact with Maui by asking him to do a behavior that we call a lob, which is where the dolphin moves their tail up and down and makes a big splash. Let's see if they can demonstrate this as well. Oh. That was awesome. Great job. Now, this is just one of the many species that swim on our planet. ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग कंगारू देखने जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट टाइम इस बार समर में ये ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली लाया गया है। इवन यहाँ के लोगों के लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। Mr. C. Sister. ये लोग जंप करते हैं। हाँ, जंप करता है all the day. It's trying to hold your bear all the day. Take it off it then. नंबर ट्रैक करने के लिए। Take a picture. मिस्टर देखो। See more. You see all the how many One. Here you can see animals poop where they eat. Yes. That's a good idea. Very tiny. That's what I'm talking about, you. You think he's on bad news. Oh wow. What you snacking on? Some lettuce? Snacking on lettuce. Taking it with me. He's hoarding the himself. Oh, the Elliot over there. So can't कहाँ लेके जा रहा है भाई? बोले हो गया मेरा। इधर देखो कितना अच्छा बर्ड, सुंदर सा रेड कलर का What if he put his arm on top of it? Hey, come here. Come here. Zachary. साइड साइड से चलो ना। देखो इन लोगों का व्हाइट, देखिए व्हाइट कलर का हैंड्स पे सबका व्हाइट। All of them look right away, like here at 10:30. We would have watched that one, but we were too late. ये देखिए राजेश को सबसे ज़्यादा खुशी हुआ था क्योंकि
पहले उनको लगता था कि ये जो मूवीज़ में दिखाता है वो ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। इवन मैं भी पहली बार देख रही हूँ और मुझे वो जंगल बुक में जो मोगली के साथ जो बियर था उसकी याद आ गई थी। Standing up and a little bit bigger. He is a 12-year-old male, and then we have Cheetah, who is a 14-year-old female, and she is now up at the top. She's got a little bit more of like a little bit more darker coloration on her at the moment. So here we are with our Alaskan brown bears, and they're just getting a little bit of just some enrichment things to mix it up during the day. It can depend on the day what they get. So it could just be some greens or lettuce. It could be coconuts. Sometimes the keepers will come out and spread like peanut butter or different things around the exhibit. So just depending on, you know, the availability and the day and just kind of mixing it up. Sarah, say hi. Don't get up there. Don't do. यहाँ राजेश ने अकेले ही एक रोलर कोस्टर राइड लिया था क्योंकि सारा का हाइट नहीं था, तो इसलिए उसके साथ मुझे रुकना पड़ा था। और आप लोग देख सकते हैं कि वो अकेले ही काफ़ी एंजॉय भी किए थे। सारा नहीं जा पाई थी, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी डेमो रखा हुआ था तो वो यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर ली थी। यहाँ हमारे साथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया। हम लोगों को लगा लास्ट में हम लोग स्काईलाइन चढ़ लेंगे, लेकिन जब तक हम लोग आए तब तक 3 o'clock हो चुका था और ये क्लोज़ हो चुका था, तो ये हम लोग खाली मिस कर गए। बात कर बात कर। तो यहाँ से ओशियन सेक्शन स्टार्ट होता है और यहाँ पे काफ़ी सारे
बहुत सुंदर सुंदर फ़िश थे। इसमें से कुछ फ़िश थे जिसमें आप लोग भी देखे होंगे नीमो मूवी, तो आगे जाके आप लोगों को दिखेगा उस मूवी के भी काफ़ी सारे कैरेक्टर यहाँ पे दिखेंगे। ये देखो मिष्टू यहाँ आ गया। हाथ तो ऐसे से। हाँ शार्क, वो देखो नीचे है। शार्क वैसे ही कुछ है, उसी का कुछ। शार्क ही है। ये देखो देखो, देखने में ब्यूटीफुल है बट डेडली है। ये लायन फिश है बेटा, मिस्टर लायन फिश, इसका नाम लायन फिश है। देखो लायन जैसे बड़ा बड़ा चीज। Oh wow. ये क्लाउन फिश देख के बच्चे लोगों को एंड बड़े लोगों को एक ही नाम याद आता है, जो है नीमो। तो जो भी फाइंडिंग नीमो मूवी देखे हैं उन लोगों को ज़रूर पता होगा। There is no shark. Outside talking to somebody. तो फर्स्ट टाइम हम लोग पेंगुइन भी यहाँ देख लिए। पहले तो हम लोग को लगा था शायद नहीं है पेंगुइन, क्योंकि यूजुअली गर्मी में नहीं होता है, बट जब हम लोग देखे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये दूसरा टाइप का है, कान देखो ना कैसे झाड़ू जैसे ऐसे निकला हुआ।
Quick, they're like little darts. बस यहाँ पे हम लोग का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया ज़ू का टूर, और हम लोग यहाँ से फिर गिफ्ट शॉप में चले गए। तो होप ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा। जैसे हम लोगों को भी फ़र्स्ट टाइम हम लोग बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस किए हैं, आप लोग भी हमारे साथ काफ़ी सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। You want another baby?